ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री चन्द्रघण्टास्तोत्रम्। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम्। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धे प्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम्। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धे प्रदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय
वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं। कुशिष्याय कुटिलाय
वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तङ्कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तङ्कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं। कुशिष्याय कुटिलाय
वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धे प्रदायकम्। विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धे प्रदायकम्। विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं। कुशिष्याय कुटिलाय
वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। अथ ध्यानं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्वनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमालावराभयकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां बिम्बाधारां कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। अथ स्तोत्रम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्रे इष्टमन्त्रस्वरूपणी धनदात्र्यानन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। अथ कवचं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दाकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन।